everyone, welcome back to Programming Geek channel. Today we will solve one more question of CodeZinger using JavaScript. Let's get started. So today's question is that replace each element by the difference of array size and the frequency of each element. So to find out the frequency of each element in the array, for that purpose we use the map method, or we can also use the object also. So here in this given question, we have a given this array with a length of 5. So we have to find out the frequency. We have to calculate the first of all the frequency of each element, and we have to subtract this frequency from the length of this array. So here we can see that we will dry run this array here. So I will copy this and let's go on our whiteboard. So in this array, we can see that this is our array. So first of all, we will create one map in which we store the frequency of our each element. So here we can see that the frequency of 1. Here in this whole array, the frequency of 1 is 1. So we will store this value into our map. That is the frequency of 1 is equals to 1. Then the next one is 2. The frequency of 2 is 3 times. Means the how many times the 2 is appeared in our this array. So the occurrences of 2 in the array is 3 times. Here we can see that. After that, the next number is the 5. The 5 which is occurred in our array with the 2 times. 2 is 3 times, 5 2 times. Okay. After that, next 2. So we have already stored the frequency of 2 in our map. Next, again 2, we have already stored. Again 5, we have already stored the 5 frequency. Next one is the 4. The frequency of 4th element is 1. Okay, so we have calculated the frequency of each elements of the array. After that, we have to find out the differences between the frequency and the array length. So here in this question, the array length of this array is, that is the 3, 6, 7. So array length is equals to 7, and we have to calculate the element that is the frequency length of array minus the frequency. So for 1, the frequency 7 minus 1, because the frequency of 1 is 1, so it will gives me a 6 value. After that, we calculate the 7 minus frequency of 2 is 3. So we subtract the array length minus the frequency of 2. It will gives me a 4. Using the for loop, we calculate this whole differences of this array elements. After that, the frequency of 5 is 2. So 7 minus 2 is equals to 5. So, okay, 7 minus 2 is equals to 5. So at the end, it will use me the array, that is the first one is the 6, 4, 5, and next one is the frequency of 2 is 3. So it will gives me the 7 minus 3 is 4. After next one also is the 2. So 2 also gives me the 4. After that, the 5. Frequency of 5 is 2. Then 7 minus 2 is it gives me 5. After that, 4. 4 appears only one time. So it will gives me 7 minus 1. That is the 6. So this is our result of this given array. This is the array length minus the frequency count. So we will check this. So here we can see that our output is that is 6, 4, 5, 4, 4, 5, 6. Now we will write the code of this question. Here you will find the input. 7 is the length of the array, and these are the elements of this array. First we will read these inputs by readLine function, which is already declared here in line number 17 to 19. Here
the main function, in which first we will declare the length, two variables, first for length and second is ARR, which is for array. Now we will invoke the readLine function here, and we will pass both the variables as parameter of solution function, in which we will simply print both the inputs by using console.log. First we will pass A and second is ARR. Now after declaration of solution function, we will call this solution function in res variable. Now let's take the output. Yes, we have this input, but you will notice here this is a string. First we will convert this string into an array using split method. Yes, we have array. Now we will separate every element using empty string. Yes. For removing the space, we will pass the space here. Now we will convert every character or substring into an individual integer or number of this array using map method, in which we will pass the number data type here. It will convert every character string into an integer. Yes. Now we will write the code to replace each element by difference of array size and frequency of that element. For this, first we have to calculate the frequency. First, we will declare an empty object in which we will pass the frequency of every element. Now, we will calculate the frequency using for of loop, in which first we will declare a variable ELE that will iterate every element. Now we will set the first frequency, obj of ELE now obj of ELE or operator 0. It means first it will give us undefined, that's why first we will set the value of this 0, then we will increment the value of frequency by 1, because after getting the first element. Now we will iterate every element which are present in this array using for loop. In for loop, first we declare a variable I, which is initialized by 0. It will iterate every element, that's why we will write the condition I is less than to A. Then we will increment the value of I. Now we will declare a variable temp, because we have to find the difference between length minus frequency of every character, every element. That's why we will write A minus obj of ARR of I. Now we will assign temp in ARR of I. Now we will return this ARR. Let's check the output. Yes, we have the correct output. To get the correct format of output, first we will convert this array into a string using join method. If we pass an empty string with a space, it will remove the commas and
Give a proper space between every element. I'm explaining this solution in Hindi as well. इस क्वेश्चन में हम रिप्लेस करेंगे each element को by difference of array size and frequency of that element. For example, ये हमारे पास array के एलिमेंट है, हम पहले कैलकुलेट करेंगे एवरी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, फिर हम उसको एरे के साइज, इट मीन एरे की लेंथ में से फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे उस डिफरेंस से. इसके लिए हम पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं 1 by 1 एलिमेंट की. 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि यहाँ 1 सिर्फ एक ही बार आया है. अब फ्रीक्वेंसी को हम 7 में से, इट मीन लेंथ में से माइनस करेंगे तो 6 आएगा. 7 minus 1 6, तो 1 रिप्लेस हो जाएगा 6 से. लाइक 2 यहाँ पर 3 टाइम्स आया है तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 होगी, तो 3 को हम 7 में से माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा. अब हम 2 को रिप्लेस कर देंगे 4 से. लाइक 5 यहाँ 2 टाइम्स आया है तो 5 की फ्रीक्वेंसी 2 हुई. 2 को अब हम माइनस करेंगे 7 में से तो 5 ही आएगा. सेम एज इट इज 2 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 3 आ चुकी थी. 3 अगर हम 7 में से माइनस करते हैं तो 4 आएगा, इसलिए 2 यहाँ पर 4 से रिप्लेस होगा. लाइक सेम एज इट इज 4 यहाँ पर कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 1 हुई. अब 1 हम माइनस करेंगे 7 में से तो 6 आएगा, इसलिए 4 हम 6 से रिप्लेस कर देंगे. इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेंगे. एम्प्टी ऑब्जेक्ट में हम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर असाइन कर देंगे ऑब्जेक्ट में. हम यहाँ पर जब भी स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे तो पहले हम अनडिफाइंड मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम 0 सेट कर रहे हैं. अगर एलिमेंट मिलता है तो 0 में हम +1 कर देंगे, इट मीन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे. स्टार्टिंग में 1 से इनिशियलाइज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 प्लस किया है. अब हम यही प्रोसेस सभी एलिमेंट के लिए यूज करेंगे, इसीलिए हमने फॉर लूप से हर एक एलिमेंट को इटरेट किया है. और टेम्प वेरिएबल में डिफरेंस को पहले हम स्टोर करेंगे. डिफरेंस किसका, एरे की लेंथ में से फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे डिफरेंस से. और डिफरेंस किसमें है, टेम्प में. तो टेम्प में हम टेम्प की वैल्यू हम असाइन कर देंगे हर एक वेरिएबल के हर एक इंडेक्स पर जहां प्रेजेंट है एलिमेंट. इस तरीके से एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा डिफरेंस से. और लास्ट में हम इस एरे को रिटर्न कर लेंगे. अब रिटर्न होगा तो ये हमारे पास एरे होगा, तो एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जॉइन मेथड यूज करेंगे. और जॉइन मेथड में हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ स्पेसेस ले दिया है, जिससे कि हम कॉमास और पर्टिकुलर एक स्पेस दे दें हर एक एलिमेंट के बीच. I hope this question is helpful for you. If you have any doubts regarding this question, you can comment in our comment section. We will solve more questions in more videos. And if you like this series, please like this video, share this series, and subscribe this channel. Thank you so much.